acid and base react to form salt and water. That is known as neutralization reaction, in which all the molecules become stable. Clear? तो उसके लिए आपको एक एसिड होना उसमें जरूरी है और एक बेस होना जरूरी है. तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इन योर सेकेंड टर्म. लेकिन अभी आप इतना जानो कि एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, these all are in the acid form. और उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सार इन टेस्ट होता है. लेकिन अभी आप इतना बेसिक जान लो. और बेस आर योर लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बिटर इन टेस्ट होता है. जैसे आपको सोप है, इसमें सोपी फीलिंग भी होगा. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एसिड और बेस का. So when an acid and one base react, then that will form salt plus water. Let us take one example. एक example आपके book से ही ले लेते हैं. What is the example given in your book? Sodium. You can write it this way also, like sodium hydroxide. Yes, sodium hydroxide, this is your base. Acid is HCl. तो क्या बनेगा? पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हमेशा हम बता रहे हैं आप लोग को. Whenever a compound is formed, एक उसमें पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा. इसमें कौन सा पॉजिटिव है? सोडियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड निगेटिव है. हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोराइड निगेटिव है. Where will the component be formed? कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा? Board is not sodium and chlorine. It will form as sodium chloride. Then what is left over? यहाँ भी एक निगेटिव बचा हुआ है, OH और H बचा हुआ. OH और H मिलके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा. H2O. Now any confusion here? Board is not clear. किसी को कोई क्वेरीज है तो बोलो. No ma'am. यहाँ No, कोई ma'am. क्वेरी है? No ma'am. तो उसी तरह से जितना भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेंगे उसमें ये जरूरी होगा कि एक एसिड होगा और दूसरा बेस होगा. अब एक और एग्जांपल ले लीजिए. One more example. Magnesium hydroxide, MgOH2. H2SO4. H2SO4 को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. हाँ, सल्फ्यूरिक. तो इसमें भी सेम रूल विल बी फॉलोड. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. इसका टू प्लस है. आप इसको कहां से बनाइएगा? यहाँ. और ये फिर यहाँ पर. तो व्हाट विल बी फॉर्म? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 plus. While I am teaching, don't talk, otherwise you will not understand. You think that it is very easy. H2O. Now you have to balance it. 2, 2 and 4. So you put a 2 over here. Now it is balanced. Now here you can see that sodium hydroxide is there and here magnesium hydroxide is there. Means it is in the form of base. वो base है और किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है.
मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और ये कौन सा स्टेट बन रहा है ऊपर? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं वही है ये सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. So let's move. Yes, anybody is raising hand? कोई और raise कर रहा है? Okay, next. Let's have. Now we will move to our next chapter, new chapter. That is your heat. Chapter number 5. मैम ये वाला फिर से समझा दीजिए ना। What? तो मेरे को क्या समझाएं? Which topic? Topic बोलो. Neutralization reaction. Displacement. Okay. Let us come to displacement reaction. Displacement का क्या मतलब होता है? एक ऑब्जेक्ट को हटाकर दूसरा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ एलिमेंट को हटा रहा है। कौन सा एलिमेंट किसको हटाएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो लेट अस कम टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement. Just put emphasis on the word displacement reaction. Displacement का मतलब क्या हुआ? Removing one element with the other. So which is more reactive will remove the other lesser reactive. Lesser reactive को हटा दे। तो let us take one example. फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे समझेंगे उसको? तो ऐसे समझना है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ देखो कोई भी आपको ऐसी जो पीस नहीं है, ये भी मेटल है और कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है? और इट इज फॉर्मिंग आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। नाउ यू सी हियर, आप देखिए आयरन क्या हुआ? मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज व्हाई वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर अपना पोजीशन बना दिया। नाउ यू विल से मैम कैसे पता चलेगा कौन किसको हटाए? तो अभी आपको जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है उतना ही पढ़िए। आपको जब एक में जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाएगा। दैट इज अ सीक्वेंस इज गिवन इन अ टैबुलर चार्ट, और उसमें आपको बताया हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे ज्यादा उसका पोजीशन है। अपर पोजीशन पर जो रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, लोअर पोजीशन पर जो रहेगा वो उससे धीरे धीरे कम रिएक्टिव होगा। तो वो उसी रूल के हिसाब से आयरन का पोजीशन कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज व्हाई आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर। अभी आप इस एग्जांपल पर स्टिक करो कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव and more reactive metals displaces the lesser reactive. Clear? और कुछ इस चैप्टर में और कुछ पूछना है? No, ma'am. नो मैम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार बता दीजिए ना। Now you are start telling one by one all the reactions. That means you don't study at all. आप लोग पढ़ के एक बार भी नहीं देखते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बोलो? Tell me what is the meaning of combination? Combine का मतलब क्या होता है? What is the meaning of combine? Ma'am, two in which two substances mixed together. खाने को combination reaction कहते हैं। Combination. Combination reaction. So combine means
to come together. Here, where two of the elements combine to form one product. H2 plus O2. Water. ऐसे करके बैलेंस कर दीजिए. So that will be combination reaction. Means two of the reactants in the reactant side. ये reactant side है, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाएंगे. Decomposition भी देख लीजिए. Just decomposition. Decomposition भी एक बार बता देते हैं. Decomposition. Decomposition reaction. In this reaction, one compound is there on the reactant side. जैसे water लेते हैं और ये break करके H2 plus O2 बनाएगा in presence of electric current. जब water के अंदर electric current हम लोग पास करवाएंगे, then it will break into hydrogen and oxygen. Clear? This is decomposition. Reactant side में only one compound will be there. Product side में it will break up into its individual element या individual atoms. Clear? अब आ जाइए chapter 5 पर. We will start chapter 5. Today we have to start chapter 5. Chapter 5. Come to page number. Come to page number. That is page number 59. Now, this is a very common experience, children. This is a feeling, hotness or coldness. When it is very hot in the sun, when the sun is very shining or bright, on that day it becomes very hot. So that we feel. But how can we, apart from feeling, how we can say that today it is very hot or it is very cold? For that we depend on the measurement of heat, that is hotness and coldness through temperature. Temperature के through हम ये पता करते हैं कि आज बहुत ज्यादा hot है तो temperature कितना है environment का. But this is our common experience also. Like just suppose कर लो, when you are drinking your milk, when your mother gives you the milk, she keeps it on the table. You feel when you are touching it, you feel that it has become, you can't hold it. Then you just let it stay over there. Then after a few minutes or few, you can say seconds or time, you feel that heat has evaporated and now it has become lukewarm, which is tolerable for you to take or drink the milk. Now, this we express the degree of hotness or coldness through its temperature. Now, heat as an energy. When we are talking, now, if we are talking about heat, then we will say that it is a form of energy. Heat is as energy. It is a form of energy. Heat as energy. This is the topic today we will deal with. And heat and temperature. Heat and temperature. And the third one is effects of heat. In this effects, there will be physical change,
change and chemical change. Like if we are talking, as I told you, as I gave you the example of that lukewarm milk or lukewarm water or hot or cold water and tea or coffee. In that same way, there are certain examples given in your book that suppose you take a ice cold milk and leave it on the hot summer day. After some time, it warms up. Then what happens to this? How does it become warm? First of all, you can consider that heat is a form of energy. And what it is said about the energy, that it is neither created nor destroyed. ना ये बनता है ना ये बर्बाद होता है. It is just changing its form. एक form से वो दूसरे form में चला जाता है. Here the same thing happens with heat also. आप जो ग्लास में water, milk, tea, coffee, whatever you are keeping, either it is hot or cold. अगर hot होगा तो थोड़ी देर में वो cold हो जाएगा. अगर या lukewarm होगा या normal temperature पे होगा. अगर आप cold, ice cold water, milk, ice cream, whatever you will take and keep it at room temperature, then the ice cream will start melting. It will changing its form from solid to liquid. So what I want to tell here, that the heat is, or the energy form, it is neither created nor destroyed. ना ये बनता है ना ये बिगड़ता है. ये अपना केवल रूप बदल लेता है. It is changing its form. Then there are certain examples also given. Let us, we will read it, but the main point first let me explain. Heat is a form of energy. Heat energy, thermal energy, that is transferred from one body to another body. एक body से दूसरे body में वो transfer होता है. Due to the existence of temperature difference between them. Like suppose आप जो hot milk लिए उसको आप टेबल पे रख दी, तो वो थोड़ी देर में lukewarm हो गया या रूम टेम्परेचर पर हो गया. कैसे हो जाता? उसमें का जो हीट है, the heat molecules get transferred to the environment. Environment में ट्रांसफर होता है और environment का टेम्परेचर वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है. और यही difference in temperature makes that particular substance hot or cold. Then transfer of heat energy or thermal energy always takes place from body at higher temperature to body at lower temperature. जो भी body अगर higher temperature पर होगा, उससे heat transfer होगा lower temperature. Like suppose कर लो, if it is hot, boiling hot cup of milk, then that will become lukewarm or it will attain the environmental temperature. It will lower down. But what about the ice cream? Then ice cream will attain the environmental temperature and it will melt down and change its form from solid to liquid. Now then again children, there is one activity. एक activity आपके book में दिया हुआ है. Every day we do this activity in our day-to-day life. हम अपने day-to-day life में भी ये activity करते हैं. कैसे करते हैं? First of all, every day your mother, yeah, we all, yeah, you also, if you are working in the kitchen, then you take water to make tea in a pan, saucepan or in a kettle. You cover the lid. What happens? After some time, you see that the water starts boiling. And if you are covering it with a lid cover, then you will see that the lid starts moving up and down. What happens? This is a movement caused by the heating or boiling of that water. This was utilized in olden days
to run the steam engine, train, because it has got so much power that it can move or it can just run the train also. But it should be more powerful. That steam should be more powerful. But nowadays it has been stopped. It has been converted into electrical engines. So it was just an example taken that we can see that through the boiling of water, there can be movement in one of the object. किसी object में movement भी हो सकता है. So this is your just one activity given. Then, as it is there in your, do you know calorific? What is this calorific? It is the amount of heat, the unit of heat, calorific value. Heat को हम कैसे measure कर सकते हैं in its calories. So it is known as calorific value. Then heat and temperature. Heat is energy of the body that is due to the motion of its constituent particles. Temperature, on the other hand, is an indicator of energy. Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles. When we add or remove heat from a body, motion of its molecules become faster or slower. Now this also we can prove through experiment. हम लोग अभी एक experiment करेंगे बाद में next class में. उसमें हम लोग देखेंगे कि how is the motion of the particles or the molecules takes place when the heat is supplied or it is removed. जब अगर heat आप उसमें डालोगे तब भी motion होगा particles में, या फिर उससे remove करोगे तब भी motion होगा particles में. Like we have studied, children, that all substances are made up of matter. हम लोग पढ़े हैं ना previous class में, जब हम matter के बारे में आपको chemical substances में बता रहे थे कि smallest, even the smallest particle element is made up of small particles of atom, and these atoms are in mobile state. And this helps the heat energy to transfer from one molecule to the other. एक molecule से दूसरे molecule में transfer of heat energy takes place through this motion of the molecules. And you can also say that this motion is less in case of solid, and it is different in case of solid. Motion is there, but the vibration will be there. But in case of liquid, there is random motion, and in gases, they are free to move. So first of all, let us start understand how is the heat being transferred. Heat कैसे transfer? Suppose a substance is made. कोई एक छोटा particle ले लो. एक छोटा object ले लीजिए और ये क्या होगा? Different atoms का बना होगा. Then these atoms will have motion if it is a solid element. अगर ये एक solid element तो क्या होगा? एक स्थान पर वो vibrate करेगा, but it will transfer energy in all directions. वो जो motion से energy generate हो रहा है, it will be transferred in all the directions, and in that way that particular object gets heated. Like suppose कर लो, जब आप kitchen में जाते हो and when you are putting one pan or anything on the stove और pan पे अगर कुछ आप रखते हो तो क्या होता है? What happens in that? It is getting slowly heated. Then how it is heated? वो कैसे heat होता है? By transfer of heat from one particle to the other. एक particle से दूसरे particle पर heat transfer होता है. और इसीलिए आप suppose कर लो कोई spatula ले लो या कोई you can say saucepan without कोई handle है अगर, तो आपको क्या करना पड़ता है? वो गर्म हो जाने के बाद आप उसको
किसी क्लोथ से पकड़ के या किसी ऐसे इक्विपमेंट से पकड़ के उतारते हो या उसको हटाते हो गैस स्टोव से, जिससे कि आपका हैंड बर्न नहीं। एंड ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो उसके लिए उससे हम क्या समझ रहे हैं कि हीट, व्हेन यू आर हीटिंग अ पैन, तो पैन इज इन कांटेक्ट विद द हीट और फ्लेम, लेकिन उसके हैंडल तक वो हीट कैसे पहुंच रहा है? हाउ इट इज गेटिंग हीटेड? इट इज गेटिंग हीटेड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर वो ट्रांसफर होता है हीट, एंड देन इट इज गेटिंग, और तब वो heated. And in the same case, the liquid also get heated, but that is due to the motion of the molecule, because the molecules are in a free state. Molecules free state में होते हैं. Clear? Now, Anshika, Yes, ma'am. प्लीज रीड इट टिल हियर। यहाँ तक थोड़ा पढ़ के देख लीजिए, कुछ और टॉपिक होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 59। Start it. Anshika, page 59. We are all finally that we the Familiar. familiar of hot and cool. On a hot summer day, we find the uncomfortable to walk. Uncomfortable. Some uncomfortable to walk, but for Barefoot on a barefoot on a cemented floor. Barefoot बोलो बेटा, barefoot. खाली पैर को, नंगे पैर को barefooted कहते हैं। During the winter month, we walk find that very floor has been that too cool. We explain that during the hottest in a body through in temperature, the more in temperature of a body, the hot in and vice versa. Ma'am, and के बाद क्या है? Vice versa. Listen children, please practice reading at home. घर में भी reading practice करिए. Vice versa. Next, heat as energy. As energy. We know from our daily explanation that the body Children, please. Words should be known to you one day before. Experience. This is experience that a bottle of ice cool milk left on a table on the hot summer day, some warms up. A soon glass warms up. Very warm. poor in reading, you just practice. और रीड करना की कोशिश किया करिए घर में भी। हाँ बोलो। A glass tumbler of bloating hot milk, keeping on boiling hot milk. boiling hot. Kept on the kept on the same table. Cools down after a while. While When the temperature is not body and the surrounded as a different, therefore the energy between the body and its surrounding. Ritima, Work constituting till the body at the Yes, surrounding ma'am. as a some Ritima, please temperature. start. Ma'am, from starting. No, from here only. Heat as energy. Okay, ma'am. We know from our daily experience that a bottle of ice cold milk left on a table on a hot summer day soon warms up. A glass tumbler of boiling hot milk kept on the same table cools down after a while. It shows that when the temperature of a body and its surroundings are different,
there is a transfer of energy between the body and its surroundings. This transfer continues till the body and its surroundings attain the same temperature. In the case of ice cold milk bottle, heat flows from the surrounding to the bottle. In the case of boiling hot milk tumbler, it flows from the glass tumbler to the surrounding. Based on such experiences, we say that heat is a form of energy that is transferred from one body to another due to existence of temperature difference between them. Second, transfer of heat energy, thermal energy always takes place from the body at a higher temperature to that a lower temperature. Let us now perform an activity which shows that heat is a form of energy and it can be converted into other forms of energy. Ma'am, activity भी read करूं? Yes, just a wait. Time is running up. I'll tell you one thing. Today, what is your work? First of all, the previous chapter, you will practice all the types of reactions and its definition, and you will start reading this chapter. I'm seeing that you all are, most of you. If you have any problem, there is nothing, you are in the learning stage, you should first practice at home. As we have started this chapter, up 1 or 2 page, everyone should be ready in reading. Your word should be known to you. Clear? सब लोग हार्ड वर्ड को अपने जो आपको हार्ड लगता है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग डिक्शनरी से फाइंड आउट करके और रेडी रहिएगा क्लास में. दिस इज योर वर्क. Chapter 4 is not coming in this term. Anshika, chapter 4 is not in this term. So later on we will do it. Abhi chapter 5 hum log ko karna. It is not in a sequence in syllabus. Clear? So thank you all of you. Thank you, ma'am. सब लोग इतना पढ़ लीजिएगा और रेडी रहिएगा. And all of you will complete your question answer of the previous lesson. प्रीवियस लेसन का क्वेश्चन आंसर जरूर कर लीजिएगा. एक्टिविटी एक बार घर में भी पढ़ोगे. टुमारो अगेन आई विल एक्सप्लेन इट. कल फिर से मैं इस चैप्टर को स्लोली वी विल स्टार्ट एंड वी विल डिस्कस. क्लियर? रीड Yes, करो. ma'am. एक्टिविटी रीड कर सकते हो जब तक टाइम खत्म नहीं हो रहा. रीड करो. To show that we can get other forms of energy from heat, take a vessel half filled with water, cover it with a light aluminum lid, and heat it over a flame. We will see that the water starts boiling after a while. The lid then rises up and falls down again and again. Here, the steam formed by the heated water could raise the lid. It therefore does mechanical work. This shows that heat is a form of energy and it can be used to do mechanical work. Yes, do you know?